Yes. Welcome all participants and the speakers for this webinar on role and scope of opportunities for professionals. I welcome Mr. CA Vivek Khurana ji, who is the insolvency professional as well as founder of CA Sansaar. He's in CA, fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and in practice for almost 3 decades. So over to you, Vivek sir. Thank you, Sudhanshu ji, CA Rajiv Singh ji, CA Denesh Singh ji, CA Amit Singh ji, Sudhanshu ji, speaker of today's webinar. थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए. अमित सिंह जी, yeah, I think now better. So, a warm welcome to all of you. And first of all, my sincere thanks to all our speakers, Rajiv ji, Dinesh ji, Amit ji. A warm welcome to all of you. Coordinators, Sudhanshu ji. Thanks to all our speakers, Rajiv ji, Dinesh ji. थोड़ा वॉइस में इशू आ रहा है. A warm welcome to all of you. Coordinators, Sudhanshu ji. Thanks to all our speakers, Rajiv ji, Dinesh ji. थोड़ा वॉइस में इशू आ रहा है. A warm welcome to all of you. Coordinators, Sudhanshu ji. Thanks. मेरे ख्याल से किसी ने 2 डिवाइस पे चलाया है, वही आवाज इको हो रही है. Hello, Sudhanshu ji. Now it's okay. Yes, sir. It's okay, sir. Sorry for inconvenience. Yes. So I was saying my sincere thanks to our speakers, Rajiv ji, Dinesh ji, Amit ji, and Sudhanshu ji for accepting our invitation and for their valuable time. And regarding today's topic, I was requesting to Rajiv ji from since long, let's do a webinar because we were getting lots of requests to organize a webinar on this register valuers. Because now it's totally changed. Because अभी पीछे मेरे पास काफी सारे मैसेज आएंगे सर आए थे सर आई एम आल्सो ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर बट दैट्स नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो आईसीआई करवा रहे थे नाउ इट्स ओवर नाउ ए न्यू कांसेप्ट इज देयर अंडर द कंपनीज एक्ट उसमें सेक्शन 458 459 कुछ उसमें कंसेप्ट है इवन न्यू रजिस्टर वैल्यूअर्स रूल्स है एंड नाउ यू हैव टू गिव द एग्जाम्स and there are an authority. IBBI is the authority, and in this authorities there are registered valuer organization, and we are so happy that two directors are with us. IBVA के एक हमारा registered valuer organization है. तो first you have to register with the RVO, वो सारे आपको बताएंगे, and then have to clear the exam under IBBI. But बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से टू ऑल ऑफ यू ठीक है इट्स ओके आप कहीं भी रजिस्टर करा सकते हो बट यस यू हैव टू सी वेयर यू कैन गेट द गुड फैकल्टीज आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई आल्सो डिड थ्रू वन आरवीओ मैं नाम नहीं लेता हमारे इंस्टीट्यूट ही हैं बट नो फैकल्टीज वाज देयर सबसे ज्यादा शोर ही मैंने मचाया था वहां पे कुछ नहीं पढ़ाया दैट्स व्हाई एग्जाम ही नहीं दे पाया दैट्स व्हाई सेइंग कि शायद हमारे पास राजीव जी जैसी दिनेश जी जैसी फैकल्टी होती तो मैं भी आज आरवीओ बन जाता आरवी बन जाता रजिस्टर वैल्यूअर सो not taking so much time. Even one more thing I am saying, after doing this register valuer course in this ICI, you can also write FCA, register valuers. Lots of new venues are there. So I'm not taking so much time because Rajiv ji bhi hai, Amit ji bhi hai, Dinesh ji bhi hai. Our so much learned speakers are there. They will guide you what's the new opportunities and what's the scope for our professionals. And this is not only for CAs.
There are one qualifications are there, CA, CS, CMA, then other people can also do. So सब कुछ हमें guide करेंगे. So now not taking so much time. So now over to Sudhanshu ji to please start the proceeding and also read the brief profile of our learned speakers also. So Sudhanshu ji, thank you and over to you. अनम्यूट कर लीजिए सुधांशु जी. Sudhanshu ji, Yes, sir. before you start giving the brief about the profile, I Okay, sir. request you to kindly keep the profile brief. Okay, sir. So that, So I would like to introduce now our director, CA Denesh Singh, sir. Denesh Singh, sir, has completed his BCom honors from BHU and is a fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and MBA Finance. Presently, he is a director in Coal India Limited also and a former independent director of United Bank of India. He is the honorary vice president of Ekman Institute of Management, approved by AICT, Ministry of HRD, Government of India, 2006. He is imparting financial consultancy to several leading corporate in the areas of financial remodeling, taxation, project financing, and auditing. So over to you, Dinesh sir. okay, thank you so very much, Sudhanshu ji. Very good morning to each one of you, panelists, as well as all the participants. Before I begin, I would like to convey my sincere thanks to the family of CA Sansaar on behalf of my board of directors, chairman, and all the members of our RVO, that is International Business Valuer Association. Very good morning to Vivek Khurana ji, my dear friend and learned faculty and authority in the field of valuation, CA Rajiv Singh ji, CA Amit Singh ji, who himself is a registered valuer and he is imparting several academic classes pertaining to valuation to all the participants under the asset category of security of financial assets, Sudhanshu ji, and all the participants. Here I would like to do a small modification or correction what Vivek Khurana ji has said just now about me. Let me clarify myself. I am not a registered valuer, nor I am a faculty for these valuation classes. These expertise areas is being taken care by Rajiv Singh ji, Amit Singh ji, and so many other learned faculty. And I would like to appreciate the point which Vivek ji has just conveyed in his message pertaining to the quality of faculty members at our registered valuer organization, that is International Business Valuer Association. So thanks to Vivek ji for such a kind words for our faculty members. Here I would like to say some more about our faculty members. See, first of all, in journey of becoming a registered valuer, you have to undergo 50 hours training, then you have to write your exam, which is being conducted by IBBI. But here, as a faculty or as a legal requirement, you are supposed to undergo training of 50 hours. But here, to provide an edge to all our participants, all our members who are undergoing training under our RPO, our faculty is taking extra pain to give you some additional input in addition to this 50 hours. We are not here just to cover up the mandatory requirement and we'll leave you like anything. We believe in giving the hand-holding kind of support, and we are planning to have some crash course immediately before your exams. And all this pain is being taken by all faculty members. And of course, it is needless to say, the lead is always taken by my dear friend and main person of our RVO, that is CA Rajiv Singh. And I'm taking this opportunity to convey my sincere thanks to him, the kind of pain he's taking. He is so passionate about this while delivering his lectures. He goes on speaking and speaking for a long hours. That requires a lot of stamina, a lot of energy. We always used to speak very high about him. And once you start attending his classes, then only you can experience what is the difference between him and other faculty. And please do not take it in
other way. I'm not criticizing anybody, but I'm saying I'm sharing my views about Rajiv Singh. And in addition to Rajiv Singh, Amit ji also taking classes. He has taken classes for both the asset category, that is security of financial assets, as well as in the land and building category as well. And if you can go in our website also in detail, where you can have all the details of other faculty members. I'm not going into detail. And here I would like to say something about the journey of our registered valuer organization, which we started. We got approval from Insolvency and Bankruptcy Board of India in June 2020, and during which the lockdown of the pandemic was on the peak. So during that time, we have managed to get this approval. Since then, we have imparted training to under the security and financial assets category, 6 or 7 batches we have already completed. Under land and building asset class, we have given imparted training to, or this 50 hours training to 2 or 3 batches. Plant and machinery is yet to be started, and we are the RVO which have got approval for all the 3 asset class, that is SFA, land building, and plant and machinery. So this is about a brief introduction about our RVO, and our philosophy is that we always believe in making you, once you become the member of RBO, we are going for a long-term perspective. Even if you qualify, you become a registered valuer, you enroll with us, then again we are giving the second inning, your hand-holding kind of thing in your professional assignments as well. If you are finding any difficulty in executing your work, we help you in getting the work as well as, because the biggest doubt which is pertaining in the field of so many chartered accountants or company secretary or cost accountant or MBA finance. I've spoken to many people. Today, actually, I'm not in Delhi presently, I'm in Lucknow. So yesterday evening, I had a meeting with 30, 40 chartered accountants at Lucknow. So we are discussing some other aspects, because I have been to Lucknow. I stayed here for a period of 8 years. I have got a good connect at this place. During our discussion, the discussion came about this registered valuer course as well. That there also we have discussed in detail. But what I have noticed, even in our professional fraternity, the awareness about this valuation course is yet to be spread. This is the need which I felt. So, to the best of my ability, I've tried to explain them all the technicalities of this course. And the second query which they have raised, and that was very valid as well, they asked me, ki, okay, ठीक है, suppose I have taken a training of 50 hours, I have passed it, then where is the business for me? What kind of revenue I'll be getting after putting my work and everything there? So that is the area that is also a concern. That today Rajiv ji, Amit ji will be speaking about lot of opportunities available in this field once you become the registered valuer. And it will presently it's live on Facebook as well as your CA Sansaar. So we can circulate this among our CA fraternity connection, so that awareness about this course and what benefit we professionals are going to have after doing this particular role, that can be explained to a larger audience, and that will help our fraternity as a whole in a great extent. As you are aware, the bill is also pending in the parliament. Once this bill is being passed, then definitely government will be coming with the notification if any valuation is going to be done under 3 asset category after a certain limit. That has to be conducted by a registered valuer. There, I believe there is a business sense, but this topic I'll request Rajiv ji to kindly explain in detail. So that will be much better. Vivek Khurana ji say, I've got one personal request to say. As he said, he has done his classes in some other RVOs. Uh, as there was no faculty, so that no study took place, and consequently he could not write his exams. So I will request him to kindly register yourself with this RVO, and definitely everybody will help you to write your exams, and you are going to come out with flying colors. With these words, I would like to conclude once again. Gratitude to CA Sansaar and Vivek Khurana ji in person. And once again, a very good morning to all the participants. With this, I would like to conclude. Thank you so very much.
Thank you very much, Dinesh ji, for your kind words. Definitely, now I'm also part of the IBVA, and definitely, for God grace, will very soon I will also be the RV. And now I request Sudhanshu ji for proceed further. Uh, so now I would like to introduce our learned faculty and course director CA Rajiv Kumar Singh. CA Rajiv Kumar has completed his BSc and is a fellow member of Chartered Accountant Institute of Chartered Accountant of India and is a CISA USA. He is a registered valuer and former independent director of Union Bank of India. He is an adjunct faculty of IICA, former Joint Technical Director of Certificate Course of Valuation ICAI, former Joint Technical Director of Certificate Course on Master in Business Finance ICAI. CA Rajiv Singh is a recognized expert on business valuation, banking, corporate finance and strategy, M&A and restructuring. Mr. Singh is uniquely blends in-depth academic specialization in valuance with his long years of practical exposure as consultant and trainer. Over the last 22 years, he has carried out complex transactional valuation analysis, transfer pricing valuation, fair value measurement for IFRS, Ind AS, NFRS, Singapore FRS, valuation for FEMA, and intangible assets valuation. He has been retained and testified as an expert witness in India and abroad, including the London Court of International Arbitration and ITAT in leading valuation cases. So over to you, Rajiv sir. Thank you, Sudhanshu. And then good morning to all of you. Namaskar, आप सबको. Vivek ji, yeah, I have noticed your point, and I'm really sorry for this. हम लोगों की बात बहुत दिनों से चल रही थी about this program on CA Sansaar. और CA Sansaar आप जानते हैं कि कितना famous है across India, in fact outside India also. And आपका कंट्रीब्यूशन इस प्रोफेशन के लिए IBBA रिकॉग्नाइज करता है, जो एक सेल्फलेस जिस तरह से आप मेंबर्स के लिए हेल्प करते हैं. बट मैं आज एश्योर करता हूं कि आज के बाद से इस प्रोग्राम के थ्रू, बिकॉज एक लार्जर पर्सपेक्टिव आपका भी है और हम सबका भी है, we will be in a position to deliver on this topic on valuation. Any member who is interested or part of the CA Sansaar anytime can come, and we can create a group also. And it's not only about those who are into profession. हम discuss करेंगे. Anybody who's not even wants to be a valuer as such is a professional capacity. This knowledge which they will acquire will have a serious implications in terms of your ability to provide services of a quality nature in today's changed economic environment. तो थोड़ा मैं एक माइक्रो देता हूँ और अच्छा रहेगा. आपको बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, हम सबको टीचर के लिए. और मैं मेरी तरफ से स्वरण से आप जब चाहेंगे हम अवेलेबल रहेंगे ये इस टॉपिक के लिए. तो मैं आपको पक्का irrespective of my engagement बिकॉज मैं कुछ चीजें स्केचअप करूंगा. और धन्यवाद दिनेश जी, आपने जो हमारे लिए इंट्रोडक्शन किया. हमारे बहुत फ्रेंड फुल टाइम लगे रहते हैं इस प्रोग्राम्स में, एंड उम्मीद है आप सबको बहुत हेल्प मिलेगा इनके साथ. इतने बड़े पब्लिक सेक्टर्स में अभी डायरेक्टर है और बैंकों का भी काफी एक्सपीरियंस है इनको. तो मेंबर्स के लिए ये वैल्यूएशन जो है नेटवर्किंग का गेम है. मतलब स्किल एक तरफ है और आपस में एक कनेक्शन, बिकॉज एक कोई आदमी एक्सपर्ट नहीं कह सकता. मैं तो बिल्कुल अपने आप को नहीं मानता. आई एम ए लर्नर. सो कई लोग कह देते हैं एक्सपर्ट बिकॉज हम वही काम करते हैं. तो ऑब्वियसली इफ यू डू अ जॉब रिपीटेडली तो करेंगे. और अमित हमारे साथ है. अमित बहुत सारा आपको डिटेल में बताएंगे प्रोसीजरल और जो भी इश्यूज है. मैं थोड़ा आपको मैक्रो व्यूज देता हूँ जो शायद आपको मोटिवेट करे, सोचने के लिए मजबूर करे, एंड ये भी बताएं कि इज दैट द राइट टाइम टू बी इन दिस एरिया. एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ कि IBBI ने अभी अलाउ कर दिया है कि आप अगर चाहें तो
नॉलेज पर्पस के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं. मतलब आपको यू डोंट हैव टू राइट पेपर, राइट. सो अगर कोई ग्रुप हो या if you are working in some, suppose you are working in some company and you don't want to practice, so can I get these ideas and knowledge? Answer is yes. आप ले सकते हैं. आप चाहे तो ग्रुप करके करेंगे या सीए संसार के थ्रू करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा विवेक जी को, तो हम उसमें 5 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का, जो भी टाइम आपको मिलता है, आवर्स में स्ट्रक्चर करके और हम आपको उसको देंगे, राइट, जिससे कि आपको उस नॉलेज एनहांसमेंट में एडवांटेज होगा. सो सर सर हाँ, सर यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ. 2 लोगों की क्वेश्चन है मेरे ख्याल से. मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि सो दैट द कॉन्टेक्स्ट इज सेट फॉर देम आल्सो. ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन इट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज नॉट इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस. और इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि इज देयर एनी स्कोप इन स्मॉल स्मॉल टाउन्स. तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप साथ साथ मैं एड्रेस कर एड्रेस दें. करता हूँ. बहुत बढ़िया है. आई थिंक मिस्टर साबू का क्वेश्चन है स्मॉल टाउन का, राइट. आई कैन सी या दैट. या And या and या and there is one question you said. What was the first question, Amit? About that, if you are an फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए क्या है अगर इफ दे आर नॉट इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस. very nice, very nice. So मैं आपको एक perspective देता हूँ why I said so for a full time employment. Because if you are in a full time employment, as per the current regulation, which Amit will deal in detail, you can't be in practice in as a valuer. That is done, right? So earlier they were not allowing people who are in employment even for educational purpose. Now they have allowed it. So how it is going to help you? See, you are a user. So user of evaluation report, and you participate or you are involved in decision making of any organization, your qualitative decision will improve greatly. And I'll give you, because see, when I talk, I do not talk based on some theoretical background. I do it and then I talk it. So I'll give you one example how things are changing across the globe, because I came out with this idea that there is a focus, and in fact, it is happening is IBBI is regulating valuation professionals, which means these are the people who are providing services. So how do we improve the quality of valuation? Right. So one side is a service provider, you improve their quality. But if the users are not trained and if they do not understand that what is there in the valuation report, either your company will have an implication 5 year, 10 year down the line, because you have accepted a report which was not up to the point. So you have not done your value creation, right, to your organization, and your decision making also would improve greatly. To give you example, with this context in mind, I started a program with Indian Institute of Corporate Affairs. This is Asia Pacific most extensive program, which Amit is also an adjunct faculty, and also this time he joined. 12-month program, right? 12-month program covering a huge gamut. And do you know, last year we had people from public sector bank, but this year we have a one private sector bank, which is the largest market cap bank in India, has sent 20 employees, and those employees are not I would say below the rank of a regional manager. They're all upward into hierarchy, which effectively means look at their focus. So the banking, India is a bank-driven economy. Please appreciate that. So the banking is the biggest user, and unfortunately, in the bank, people do not know. So the lot of frauds and other areas which are happening is the one segment. Same is for your corporate. So if you're in a corporate, your quality of decision making, because the kind of topics and issues or analysis skill which you can acquire through this is a multi-dimension skill would require for to become a valuer. So which effectively means it helps your logical analytical skill, and as a result your decision making quality improves. Plus within the company, how you hire the valuer, if you are good or understand the game, you would be hiring a good quality valuer, because under the Companies Act section 247 also talks about it is the responsibility of board or the audit committee to do that, right? So you will be functioning as a part of audit committee to support the audit committee in discharging their responsibility about the valuation apart from your own desk, and it gives you extra wings, right, for flying into the organizational hierarchy for people who are
in employment. I hope it is clear to you now. I'll give a lot of more opportunity because I think with Vivekji, I'm absolutely clear in my mind that we can deliver this conceptual point and a lot of things even outside the registered valuer concept as and when you need it. I mean, just you have to सर give a message to Vivekji. We will सर provide एक that. पॉइंट मैं ऐड करना अमित चाहूंगा यहाँ पे। अमित जी मैं क्वेरीज बाद में डिस्कस कर लेंगे. लेट नहीं नहीं अमित क्वेरीज नहीं इंट्रोड्यूस मैं समथिंग. कॉन्सेप्ट मैं There is फंडामेंटली some, बात करना yes, चाहता Amit. हूँ। Yeah, हाँ, yeah, तो Amit. मैं यहाँ पे ना स्टॉर्म को दो पार्ट में बांटना चाहूंगा। बेसिकली बिफोर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर यू हैव टू बी रेडी फॉर बिकमिंग अ वैल्यूअर। रजिस्ट्रेशन कराना उसका पर्पस क्या सर्व होगा वो अलग बात है। पहले यू शुड बी रेडी टू बिकम अ वैल्यूअर, देन यू शुड लुक फॉर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड। मतलब किसी का क्वेश्चन है या कुछ है तो अगर हम एक बार वैल्यूअर बन गए, रजिस्ट्रेशन अभी होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, कब होगा हम प्रैक्टिस साइन करेंगे। हम वैल्यूअर हैं तो हम उसको रिपोर्ट को किसी के एज अ यूजर समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, उसका क्या यूज करेंगे वो अलग एस्पेक्ट है। तो पहले वी शुड लर्न अबाउट द मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन फील्ड ऑफ वैल्यूएशन, फर्स्ट he should understand the valuation and then he can move on thinking getting themselves registered for any particular purpose. हाँ अमित, उसमें मेरे ख्याल से आप मुझे करेक्ट करना जब आपका बारी आएगा या सुधांशु, जब आप आखिरी से फ्यू इयर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट इज लेफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशन तो आप पेपर लिख लीजिए बिकॉज 3 साल तक आपको टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो जब ये आप रिटायर होंगे तो आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और कहीं नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ आ जाना। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आई मीन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ जाती है सर उससे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मतलब बिकॉज इवन आप इफ आई एम इन एम्प्लॉयमेंट आई हैव सम मोर ऑप्शंस टू इवैल्यूएट। मतलब मैं अगर अपनी फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, मैं ऑडिट में हूँ या मैं अकाउंटिंग में हूँ, एंड इफ वांट टू एक्सप्लोर वैल्यूएशन फील्ड एज अ एम्प्लॉय आल्सो, तो वहाँ भी हमारा स्कोप बढ़ जाता है। करेक्ट। और अगर आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखते हैं, मान लो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो ये सीरियसली ऐड ऑन होगा बिकॉज आपके पास ऑलरेडी डोमेन एक्सपर्टीज है और ये नॉलेज होगा तो आपको वैल्यूअर्स को भी सी all valuers cannot be an expert of everything happening in the industry. So they need some people who have that detail over a period, you know, acquired a skill which is something is not available on internet or Google, etc. Right? So you need to connect them. That's what I say. It is a networking game. So therefore, your skill set will be seriously respected. Now the question was, Amit, another was whether small town guys, what they will do. ये एक myth है, मैं बता रहा हूँ because I have the data set to prove you. Look at the people from South India and Eastern India. I'm talking this based on not IBBI data. I'm talking this based on IICA data, where both of us are there. Me and Amit. Most people who are coming in is from South India. If I have to bifurcate in geography or Eastern India part, the reason they understand the future, right? Now, what is the future? I'll give you the gamut so that you can understand why it is important. Even if you are in a small town, in this kind of a like we are interacting. I mean, Vivek is sitting somewhere else, I'm sitting somewhere else, Amit is sitting somewhere else. So this is a global knowledge, boss. This is a global skill. The language which you speak in India, the same language will be spoken in UK, the same would be spoken in New York, Moscow, CIS countries, Middle East, wherever you go, including China, right? The delivery language like English or some other, you know, local language would be, that also is not a hurdle. The conceptual part in economics is same. So if I sitting here can provide services in say in Qatar or in Middle East and Dubai and Singapore, why can't you sitting in a small town provide services to your friends sitting in Delhi and Mumbai and Ahmedabad, wherever they are located, right? So everybody is looking a right kind of a people. And since you are sitting in a small town, you have a more time available, believe me, because you will be saved from traffic movement whenever it opens fully. And those extra hours you can get attached and do support services if you don't get client there. I get your point. Because when I scope up the skill, scope up the requirement, you would know that
even one segment I take, say suppose Indians compliant valuation. Now, as I said, we have started educating people from user side. The user is the one, like I said, banks, corporates, those people are coming. But I have not so far told you the other set of user who have joined through IACA course, Vivekji, is the regulator. So we have got participant from now from SEBI, we have got participant from RBI, from SFIO, maybe tomorrow we'll be getting a participant from NAFRA and from CAG. These people were not earlier, have that kind of a skill set where they can question you on a valuation report. Now, because they are becoming part of that, like a banking fraud, last time there was one participant, Vivekji, who is an RBI representative and full time sitting on deputation in a CBI office, right? So his job is to advise. And that guy was a part of valuation. He said, if I would have attended your program, say a year back, I think I would have resolved a number of cases in 1 month time because they did not touch. And some very high profile cases, I will not take name, has been resolved with those kind of a skill set. So the kind of asset monetization program the government has announced, that would require a serious amount of evaluation, right? So this would be the one segment which you can think of. Small town or big town does not make any difference in today's kind of a technology-driven business model. So I'll be very happy if somebody is sitting in Guwahati, somebody is sitting in maybe in Arunachal Pradesh, attached with me, work for me. So for me, it's a virtual office. So how does it make a difference there? And even you can work in day and you can also work in night. So 7 o'clock you can work for US from, it's just a connection and networking, as I said. So the first prerequisite is to acquire the skill. And once you acquire the skill, then like you've seen, you've heard about this cryptos and all kind of digital assets where the people do a mining. Now there are website I'll discuss with you, Vivekji, where you can do a mining for work. So the people have come out with a idea that why can't we have a open platform where all kind of a jobs are available and you go and mine and find out for what is suitable for you. So those issues are also coming up, and I think would be a great opportunity because see, appreciate that if you are into, I'm not criticizing though income tax or indirect tax, but the way it is moving, there will be a lot of things which we do right now may not be available 5 years down the line. With the introduction of artificial intelligence, machine learning, all those issues will be out. And the CA's opportunity there will be very difficult to survive. As you've seen, GST audit gone, they are not going to come back. I will not be, Vivekji, wrong in my forecast, though forecasting is a silly job and always you get a mud on your face some point in time. But I'm thinking maybe if you have that kind of a AIS intelligence, which we get annual basis, what is the need of then you have something called tax audit. So it can go and your opportunity will be limited. The knowledge is skill set also will be very restrictive. But in taxation, what is booming in my understanding is the international taxation. That would always remain. So you have that opportunity to be part of that. I think Amit and all of us have worked on this area of arm's length pricing determination, not only in India but outside India. That is, you'll be surprised. I don't work in any 5 method of the arm's length determination. First 5, I only work in the other method, and their other method is what is the valuation skill set is. Where all 5 method fails, you come for other method, and that's how the valuation requirement is for the income tax. So that is a high-end job, and you'll get the opportunity. The recent thing, if you have seen the budget, and for last 2 years, Vivekji is aware, I think a number of times have raised this issue on various platforms, including ICI, and Amit was a part of this team who prepared this concept paper 2 years back on arbitration. Now we have an international arbitration announced, approved, and accepted by the. Nobody knows that we were the people, and we don't want to claim it. I'm not interested in any claim or credit.
I'm very happy that we visualize. And what was the reason for that? Because ease of doing, we are improving, and we have improved over a period, right? On that ranking. But on contract enforcement ranking, we are still 160 plus. So we thought that why not this idea should be propagated to the government of India, and they have realized the potential, because the foreign investor, they will folk in India if they will find that if I enter into contractual arrangement, what will happen tomorrow if there is some dispute? Where is the redressal? So you have in Gift City in Ahmedabad, the International Arbitration Center is now open. It is open in a manner that it will function, you will be functioning in India, but it will not be governed by any Indian law. So this will be based on the international concept. So Vivekji, again, what we were talking then, all international arbitration will be done based on international valuation standard, right? So you need a comprehensive infrastructure. You can't be an expert witness, or people coming in, say, Ahmedabad gift center. They will not be taking their experts from somewhere else in the outside India. We, as a professional, have a better opportunity to go there. Then I'm also told yesterday, now, this is a very good move, as the Chartered Accountants should be happy that NIRC of ICI has approached the Delhi High Court that the experts should be part of the arbitration system. If that happens, I think even the Delhi High Court, which is a nodal high court on the Companies Act, if they start doing that, and you as a valuer or a skill with a valuation skill start helping arbitrator, I'm sure the judgment which takes years will be finished in 1 month or 2 month time, and this will be a great thing for the economy, great thing for the professional, and you are going to get opportunity for that. The next area which I believe, as I said, the bankers are the biggest user. Anytime now, because they have started improving on their performances, the index can be implemented in the banks and the insurance companies. And I look at the number of insurance companies which are lined up for an IPO. There'll be more in future. So if these two will go for index implementation, you require a serious amount of a professional who would be providing services and valuation and various capacity, because the valuation mechanism under index is absolutely different from what has right now been prescribed by regulator Reserve Bank of India. This is different. Similarly, for NBFC is already there, but the quality is very bad, right? So that can be improved. One important point I can tell you what Amit was referring is that because this RBO, or there are others also who have got all three sets of valuers like SFA, land and building, and platinum scenery. You have, Vivekji, if I am wrong, please correct me. You have now opportunity to create a multidisciplinary professional firm that is a registered valuer with a chartered accountant, engineers, and all together. And the one area of the work, please let me remind you again, the one area of work about the bank valuation, mortgage valuation area, which is maximum in India, maximum, because banks require valuer at the stage of appraisal, when the loan goes bad, and then when they want to exit of that bad. That all three segments in the banking, right, would be needed. And earlier it was a domain of engineers. If you can see that the land building, the plant capacity guy, it can automatically come to a chartered accountant if you form a entity, and that registered entity will is a multidisciplinary entity, but then the process should be that you should get approval from ICI. That is better, because there are a lot of people who are doing who have not done that. And do you know how many today we have got RBE? Just 50 plus. So this country can have a large number of RBEs even to serve for this country professional work in this segment. And internationally, if I capture compliance valuation, if you see, pretty costly, and people wants to reduce. To give you an idea, in the Middle East, if it is 100 rupees charge in Middle East, in India you can easily do in 20 rupees. So this is the gap right now in software development and in valuation services. The same Indian who will go to Dubai or tomorrow the Qatar, all those places, their charge will be 100 rupees. But if you're sitting in India, you can do. So there are a lot of people who are having offices in Middle East,
they have created their virtual offices in Bangalore, in Hyderabad, in Pune, and or other places of the country, right? And all security systems there. There is no problem. Data and other controls are nowadays is not an issue. So therefore, you can become a part of the global system of a valuation ecosystem where you will have an opportunity multiplied. Believe me, multiplied. So don't look at the local issues only where you have to do services. And as I said, some area we would be in a position, we are in a position to capture, especially in banking, because they are the biggest user of valuation services in the country, and also the regions of the fraud. So, and then you have a litigation segment where it is an arbitration or the courts or the tribunals or the NCLT, everywhere, if there is a disputes in the valuation, you can go in expert witnessing, and either on the defense side or on the claimant side, whatever you choose the role, you would be providing those services. So I think that will be a massive exercise going to come. And then Amit will highlight you the new valuation bill. Right now, suppose some chartered accountants are in a position to do valuation for FEMA. Tomorrow they will not be, because then again the registered valuer concept will be needed. That is a professional areas. So all act right now, for instance, under surface eye, only wealth tax registered valuer can do a valuation, not even a registered valuer. So the banks are in a dilemma. What should they do? They know that they are not capable people because they are not regulated like the IBBA registered valuer, where we have a two tiers regulation. One is at IBVA level, another is RVO level. So, in my mind, opportunities are tremendous and it is rising. And then the next segment which has come up, I can tell you, this is my forecast. I just said it's a silly job, but we are a professional, we do it. That's how our role is. So you must have heard about the bad bank. Now, I would say in coming days, next 4 or 5 years, IBC will have a very few cases referred to NCLT. Maximum property of a substance or a company which has got an opportunity to survive, they will be sent back to the bad bank, which will be managed because there is no time limit there. That is the professional management can sell as per their own procedures and system, right? As compared to in the NCLT, where they'll be finished in some given number of days. So what happens in NCLT is that since there is a restriction of number of days, so after that number of days start, getting closer, you go to the closure date, closer to the closure date. What happens at the end? That your value, declines because the buyer would know in the market that they'll have to do something. Either you continue with the business or you close down. So that aspect government has realized, and your realization rate in IVC is nowadays just 30%. So all those things will go to a bad bank. So if a bank sells assets to a bad bank, let me tell you, bad bank is not something which we call it as the name suggests, is not bad. They are only buying the bad assets, so-called bad assets. All assets would not be bad. I think we as a professional must know that if the account is an NPA, does not mean that the whole company is bad. Promoter might have done something wrong. In fact, I made a paper presentation in IIM Bangalore, Vivek. The title was "The Going Concern Was Sold Like a Gone Concern," because that is what is happening in an IVC. There are some good quality businesses and they are being sold at a very cheap price. And the reason I explained you, there is a cohort, the people who are working and then deliberately trying to depress the value so that the existing promoters can benefit. And that's the fact. So you have that opportunity there. Then through a security receipts, these transactions happens. So there will be a lot of valuation activity now getting shifted from NCLT to the bad bank. And what NCLT will be capturing is the merger acquisition, restructuring, all kind of things, your routine 230, 240 of the Companies Act regulations will be there as a part of the NCLT, and less pressure for those opportunities which are available there. So I hope, and then similarly, was income tax. This also is going to go change and will be covered under the registered valuer very soon.
So the merchant bankers will be out of the picture because right now some segments I think CAs are very unhappy. I also as a CA is not happy because they are not superior to us in any way. We are who are the people who are doing valuation for a merchant banker. Merchant banker is an entity, isn't it? Within that somebody is doing job. So if a CA does a valuation as a part of a merchant banking team, you accept it. But if a CA does that valuation as a part of a professional entity, you say, sorry, we will not accept. This is something not acceptable and is going to go change. So you have this multi-ferrous opportunity inside India, outside India. It is up to you to decide today, do you want to become part of this, be back on this growing opportunity and provide. The last point I'll tell you that remember there are three countries in the world right now very crucial: USA, China, and India. Right now, Chinese population is aging. Right, Chinese population is aging, and I'm giving a very simple GDP estimate, not an economist. So GDP is nothing but workforce multiplied by the productivity. So you can understand how do we increase the GDP? Either your workforce should be higher or you multiply the productivity. So the America workforce is very minute, one fourth of say China or India. So what will happen? They have improved their productivity, but there is a limitation. If the Chinese are aging and they very less number of youngsters are entering into the workforce, and yeah, the old people because of the COVID are retiring faster than they were expected. So there is a limit for increasing productivity to sustain the GDP. Are you getting my point? And that is the reason why India has a big opportunity because we have the similar kind of a workforce, right? The only problem is that there is no productivity here. The per capita per individual productivity in India is very low. Even if you go into segment wide, if you can improve with the services quality, I'm sure India can become the next software giant. Like you've seen the software, what is our position in the world? The values of services is the one which I have identified. And the government of India is supporting, helping you in this exercise. So please come together and as a professional or as a user or for your enhancing your career opportunity, join this course. I think Amit should now come and elaborate you more on procedural and other issues. And I think we can give you opportunity to ask questions, which all of us will be able to help you. Thank you again, once again, Vivekji and all audiences who are hooked to the program. Thank you very much for listening us, and I hope it makes sense to you. Whenever you need us, please do tell him, Vivekji, and I think we'll be on anytime to help you in this your exercise, so that you can serve for the company, serve for the state, serve for the country, and also to the world. Because Tavito Basudev Kutumbakam, this is the one segment of the service which is a part of the Basudev Kutumbakam. Does not makes difference whether which religion, which part of the world you are. If you are capable and you can deliver, you are accepted. Thank you very much. Thank you very much, Rajiv ji, for such a wonderful presentation. And you rightly said it's not only for we chartered accountant or the company secretary. Valuation knowledge should be with all of other persons who are into the good position, like you mentioned about the person who are into the CBI. Yes, and also like you mentioned to organize some short course for 5 days. So definitely we'll be in touch and we'll do. And now I request Sudhanshu ji, Amit ji, will you cover the qualification, etc.? Should I tell? Will you cover in No, your no, presentation? I'll cover broadly. I'll cover broadly. Because someone was asking the question also. So Rajiv ji, if you want, we can take some questions also. But I So, think yeah, let Ramesh uh, to address, and at the end we okay. will take jointly. As done, many as done. question are there, आप चाहें तो 5-10 मिनट extend कर सकते हैं program. I have No, no. नहीं, definitely time is with us. कोई issue नहीं है, sir. Definitely we'll do, So we'll do. I Definitely. hope there is no other program lined No, up, so कोई no, दिक्कत नहीं. no, definitely, definitely. Yes, Sudhanshu ji, now you can proceed. Yes, sir. So now I would like to introduce CA Amit Singh. CA Amit Singh is an IBBI registered valuer. He is an alumni of India's biggest valuation team at one of the world big four consulting firm E&Y.
He is a fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and Bachelor in Law from prestigious Law Center 1 of Law Faculty of University of Delhi. Mr. Amit has over 15 years of exposure and hands-on experience in dealing with nitty-gritty of valuation of businesses, equity for private venture, as well as public enterprises for purposes like transactions, sale or purchase, compliances, FEMA, transfer pricing, or requirement of RBI, indirect transfer, valuation of financial instruments, derivative like SOP and ESOPs, preference shares, debenture valuation. He has served several reputed multinationals, corporation, and offshore consulting firm. He is a visiting faculty at the School of Finance, Indian Institute of Corporate Affairs, run by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. So over to you, Amit. So thank you, Sudhanshu ji, and thank you, Vivek ji, for this opportunity to interact with our fellow chartered accountants. I believe in this group, most of the people are chartered accountant, as the name suggests. Chartered accountants are maybe a student of chartered accountancy course, as the name suggests, CA Sansaar. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है यहाँ पे, और जो मुझे टाइम अलॉट किया गया है वो बहुत छोटा है. आई डायरेक्टली कम टू द वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज इन जनरल एंड देन अपॉर्चुनिटीज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. सो बेसिकली अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, मेरे ख्याल से स्क्रीन विजुअल है, सुधांशु जी? हाँ, अब ठीक है. हाँ, ठीक है. तो हमारा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे 4 सेक्शन हम बाँट सकते हैं वैल्यूएशन प्रैक्टिस को ब्रॉडली, कि हमें कहाँ-कहाँ वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ सकती है. आई विल कनेक्ट इट टू द रजिस्टर्ड वैल्यूअर थिंग. पहले एक बार हम वैल्यूएशन थोड़ा समझ लें. दिस इज़ व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि पहले हमें वैल्यूएशन या वैल्यूअर को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रोल और जॉब ऑफ अ वैल्यूअर, एंड देन हाउ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोर्स और रजिस्ट्रेशन विद IBVI कैन हेल्प अस टू अचीव दोज गोल्स. तो पहला हमारा है बेसिकली हमें वैल्यूएशन जरूरत पड़ती है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए. जैसे हमें कोई अगर बिजनेस एक्वायर करना है, कहीं पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है, या मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, बाय बैक करना है, तो वहाँ पे हमें पहले प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्राइस पे करना है ये काम. अमालगमेशन करना है, डीमर्जर करना है, स्लम सेल करना है, अगर हमें शेयर स्वैप करने हैं, बाय बैक करना है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं स्ट्रैटेजिक रीजंस में. दूसरा हमारा रिस्ट्रक्चरिंग आता है, तीसरा हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आता है, और चौथा हमारा आता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. सो जहाँ पे हमारे पास टैक्स वैल्यूएशंस होती हैं, टैक्स कंप्लायंसेस पर्पस के लिए. किसी ने बीच में पूछा था कि 11 ईयर के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट वैल्यूएशन नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकते, नहीं कर सकते. वी विल एड्रेस ऑल दोस क्वेश्चंस. सो ब्रॉडली जो हमारे एक्ट्स कवर होते हैं जहाँ पे कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है, कंप्लायंसेस में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, दोज आर इनकम टैक्स एक्ट, सेबी, आपका आरबीआई या फेमा कह सकते हैं, और कंपनीज एक्ट हैं. इसके अलावा एक एक्ट और आता है जो बेसिकली है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जहाँ पे हमें वैल्यूएशन की या रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है. सो ब्रॉडली ये कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है. दूसरा आता है, ये एक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि कौन-कौन से एक्ट्स हैं. इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे की एक बार हमने ये देखा कि हमें वैल्यूएशन की जरूरत कहाँ पड़ती है. अब आई डायरेक्टली कम टू द रजिस्टर्ड वैल्यूअर एस्पेक्ट. अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन है किसी का तो उसको हम पार्क करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैं पहले एक बार ये एस्पेक्ट्स कवर कर लेता हूँ, देन वी कैन डिस्कस द स्पेसिफिक क्वेश्चन. तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर रूल हमारा जब इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या था कि वैल्यूएशन प्रैक्टिस को रेगुलराइज करें, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले तक इंडिया में कोई वैल्यूएशन स्टैंडर्ड नहीं था, एक्सेप्ट वन व्हिच वी यूज्ड टू रेफर इन आवर वैल्यूएशन, जो आईसीआई ने इशू किया था 2010 में. आई बिलीव दैट वाज कैश वन. तो वो भी रिकमेंडेटरी था. तो वैल्यूअर चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, मर्चेंट बैंकर करे, या कोई भी एज अ एमबीए फाइनेंस करे, वो अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यूएशन करता था, कोई वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता था. तो कोई एक सेट प्रैक्टिस नहीं थी कि वैल्यूएशन करते समय हमें एज अ वैल्यूअर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो एक वो पर्पस था. दूसरा ये था कि ये रेगुलेटेड नहीं थी प्रैक्टिस, तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट कम अप विद अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर रूल, जिसमें उन्होंने कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया. वहाँ पे उन्होंने ये प्रोविजन बनाया कि रजिस्टर्ड वैल्यूएशन की प्रैक्टिस एक अलग रूल के थ्रू होगी, और एक रेगुलेटर होगा जो इसको मॉनिटर करेगा, जो कि आज की डेट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो हमारे वैल्यूएशन प्रैक्टिस को
रेगुलेट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, ये कंपनीज एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया, कंपनीज एक्ट के अंदर ये सारे रेगुलेशंस आते हैं, तो देयर आर सर्टेन पर्पसेस जहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर हमारा बेसिकली मतलब सोल वैल्यूअर नहीं है या फिर प्रिफर्ड वैल्यूअर नहीं है। वहां पे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दे दी गई थी लॉन्ग बैक, जैसे इनकम टैक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर्स की बात करता है, फेमा में चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर की बात करता है। ग्रेजुअली आई सी सो यू कि अब ग्रेजुअली चीजें चेंज हो रही हैं, यानी फेमा में भी अभी एक ड्राफ्ट रूल आया है, रेगुलेशन आई है, जहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड वैल्यूअर को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो हम उस पर आएंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा देख लें कि कौन रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, यानी क्या डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको वैल्यूएशन एग्जाम पास करना है, बट उससे पहले वैल्यूएशन एग्जाम अपीयर करने से पहले हमें एक 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं जा रहा कि हमारे पास क्लास ऑफ एसेट्स क्या है, जो रूल्स हैं वो सारे क्लास ऑफ एसेट्स के लिए लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि हमें पहले सबसे पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन बन सकता है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक एंटिटी बन सकती है, यानी कंपनी बन सकती है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक पार्टनरशिप फर्म बन सकती है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक एलएलपी बन सकती है, या रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक इंडिविजुअल बन सकता है। अब इंडिविजुअल से हम शुरू करते हैं। इंडिविजुअल अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, विच इज नथिंग बट he should be a postgraduate with 3 years of experience, or maybe a graduate with 5 years of experience, or a member of any professional institute like CA, CS, cost accounting, या फिर he can be a MBA, MBA from a full time course। सो ये होने चाहिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद उसको एक 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है किसी भी आरवीओ से, इन दैट पर्टिकुलर नोटिफाइड इन दैट पर्टिकुलर क्लास। उसके बाद उनको एक एग्जाम पास करना होता है विद इन 3 years ऑफ कंप्लीटिंग दैट ट्रेनिंग ऑफ 50 hours। उस अब 3 साल 3 साल के अंदर आप कभी भी एग्जाम देंगे तो आप एग्जाम पास करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के अंदर एग्जाम नहीं देते हैं या एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं तो आपको ये 50 घंटे की ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ेगी। ये अभी करंट सिचुएशन है। अभी ये सारी चीजें शायद चेंज हो जाएंगी, ये 50 घंटे की ट्रेनिंग 400 घंटे की ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी वैल्यूएशन इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट आने वाला है। उसके बाद ये ट्रेनिंग 50 घंटे से 400 घंटे पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा वो क्या नहीं होना चाहिए, he should not be a minor, he should not be a declared unsound person, on discharge insolvent नहीं होना चाहिए, he should be resident of India, should not be convicted, जो जनरली हमारे डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन के लिए जो हमारी या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो पैरामीटर्स है वो सिमिलर यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, एक बार आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन गए, एग्जाम पास कर लिया। यहाँ पे जैसे एक मैंने क्वेश्चन रखा था, ये बड़े सारे लोगों के आते हैं कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीओपी होल्ड करता है, प्रैक्टिस में है, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है? वो ऑफ कोर्स वो बन सकता है। ही कैन होल्ड बोथ द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस साइमल्टेनियसली। तो वो बीइंग अ practitioner chartered accountant, he can become a practitioner registered valuer as well। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये ब्रॉडली हमारा कवर किया है मैंने यहाँ पे। स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ होगा तो आई एम हैप्पी टू टेक दोस क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है कि कंपनीज एक्ट में क्या अपॉर्चुनिटी होती है, विवेक जी, डू यू वांट मी टू वॉक थ्रू कि कंपनीज एक्ट में कहाँ वंस यू आर अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर या इन डिफरेंट एक्ट्स आपको वैल्यूएशन की कहाँ जरूरत पड़ती है? तो आई विल क्विकली वॉक थ्रू दैट आल्सो। विवेक जी, आपका माइक म्यूट पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आपने, बस एनफ। बट एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, शायद राजीव जी से भी। आई थिंक कंपनीज का तो नहीं कोई कॉन्सेप्ट आरबी के लिए, आरबीओ के लिए है। कंपनीज का आरबी है, आरबी है, आरबी है, आरबीओ में है कंपनीज का। बिल्कुल आरबी है। आरबी बनने के लिए बेसिकली आपको कंपनी शुड बी having a main object clause as a valuation services। इसके अलावा इसके अगर 3 से ज्यादा डायरेक्टर हैं तो मिनिमम 3 डायरेक्टर आपके रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए। आप किस क्लास में रजिस्टर कराना चाहते हैं उस क्लास से मिनिमम एक आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए। एंड देन you can apply to IBBI for registering that company as a registered valuer entity। वर्ड यूज होता है, एग्जैक्टली। RVE वर्ड।
that's what I'm saying. That's registered valuer entity. हाँ, But तो as a अभी registered valuer, only I think, might be I'm wrong, only नहीं नहीं individual can be the registered valuer. नहीं नहीं नहीं, आज की डेट में पार्टनरशिप, नहीं, एलएलपीज, वो तो एंटिटी, कंपनीज, एंटिटी तो वो बन जाएगी डेफिनेटली, वो तो हाँ एंटिटी भी बिल्कुल बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। आज नहीं की डेट में आई थिंक राजीव सर यही कह रहे थे, शायद 50 प्लस रजिस्टर्ड वैल्यू एंटिटीज हैं। एंटिटीज हाँ डेफिनेटली, हाँ 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 हाँ, नहीं, एंटिटीज एंटिटीज बनने के पहले आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो बनना पड़ेगा, एग्जैक्टली तभी एग्जैक्टली दैट रजिस्टर्ड। एवरी बिल्कुल इंडिविजुअल, बिल्कुल। यस 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 यस, हाँ दैट्स क्योंकि That's करेक्ट, वो एब्सोल्युटली, compulsory, sir. यस यस Yes. यस, और जो एंटिटी है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में वो कंपनी भी बन सकता है अगर आप सीए इंस्टीट्यूट से परमिशन लेते हैं, जैसे हमने एग्जैक्टली, अपनी बनाई है, वो अमित भी एमसीसी बना है। बना के। तो पहले यस यस, बहुत लोगों ने विवेक जी लिया नहीं है, वो नॉन हाँ कॉम्प्लाइसेंस मेरे हिसाब से, बिकॉज तब आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, आईबीबीआई को कोई दिक्कत नहीं है, बस सीए हाँ, इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम होगा अगर आप सीओपी होल्ड करते हैं। यस 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 यस, अमित जी। सो मैं एक बार क्विकली वॉक थ्रू करा देता हूँ कि हमें कहाँ कहाँ वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, कंपनीज एक्ट में कहाँ पे पड़ती है, एंड देन आई थिंक हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम है अभी, इट विल बेसिकली टेक। बेसिकली अभी जो क्लियर थोड़ा सा नहीं हुआ, जो कई अभी क्वेश्चंस भी थे ड्रॉप्ड आउट वगैरह, बेसिकली इफ यू आर ए सीए सीएस सीएम में प्लस 3 years एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर द 50 hours ट्रेनिंग, और 50 hours ट्रेनिंग आप जैसे हमारा अपना आईबीवी है वहां से ट्रेनिंग ले सकते हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जहाँ पे राजीव जी जैसी फैकल्टीज हो, एंड देन यू कैन गिव द एग्जाम। आईबीबी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे आईपी के एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, बट दैट कैन ओनली आफ्टर 50 hours ट्रेनिंग, हाँ, तो हम राइट एक अमित जी? काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चंस वन और बाय वन इसमें लिख आप लेते एक हैं। अमित जी वो भी बता दीजिएगा, नोट ओनली सीए सीए सी में माइट भी कई लोगों ने पूछा कि मैं ड्रॉप आउट हूँ, तो उसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो 5 years की प्रैक्टिस के आपके पास एक्सपीरियंस के साथ है, दैट्स वो व्हाट भी आई एम थोड़ा बता दो, ताकि सेइंग। लोगों में थोड़ा सा वो सर मोटिवेशन हो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अमित सर यस मैं बता यस दूं। सुधांशु, हाँ हाँ जी, प्लीज हाँ जी। सुधांशु, हाँ, इसमें सर जो एसएफए कैटेगरी है, सिक्योरिटीज और यस फाइनेंशियल यस, एसेट्स के लिए, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है सीए सीएस आईसीडब्ल्यूए एमबीए फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस, ये क्वालिफिकेशन प्लस 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वेदर यू आर इन जॉब और इन प्रैक्टिस, ये क्वालिफिकेशन है सर। एंड द प्रोसेस फॉर बिकमिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर कि आपको आरबीओ का मेंबर बनना होता है, 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है, और वो 50 घंटे कंपलसरी है सर अटेंडेंस। उसके बाद आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेसिस पे आप एनआईएसएम में अपना प्रोफाइल क्रिएट करके वहां से डेट टाइम और प्लेस सेलेक्ट करके एग्जाम सेंटर पे जाना होता है। एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स पासिंग है, 0.25 निगेटिव है, कोई लिमिटेशंस नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। आप जितने चाहे बार दे, जितने बार में क्लियर कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है आईबीबीआई में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट आने के बाद फिर हम 4 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। उस 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपको सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। देन यू कैन प्रैक्टिस एज ए registered valuer in securities and financial assets class. This is the procedure. yes अमित। So Sudhanshu जी, can you read the questions one by one, ताकि सारे questions cover हो जाएंगे, क्योंकि we are running out हाँ of सर, time। मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। आप नहीं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। हाँ, आप इसको हाँ, screen- शुरू से कर दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग से कर दीजिए सर। और ये जो आपका जो एग्जाम भी है, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। यस, एमसीक्यू है सर। आई थिंक मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है सुधांशु हाँ। कि क्या ये अभी ऑनलाइन है या फिजिकल है, तो अभी तो देखिए मार्च तक तो ऑनलाइन ही अलाउड है, तो 31 जितना मार्च जल्दी तक आप allowed कर लें, इंडिया किसी कोने में घर बैठ के, और हम लोग तो सैटरडे संडे क्लासेस कराते हैं सुधांशु, तो आपके लिए बड़ा आसान है, बट जब फिजिकल वीकेंड होगा में। तब देखेंगे। यस, नहीं अमित सर, 2020 वाले अभी 2020 के क्वालिफाइड तो अभी एलिजिबल नहीं होंगे सुधांशु। नहीं दिस सर, इज 3 years से। अभी नहीं है सर। अभी तो ये 2023 क्लास में। कर सकते हैं, न सीख सकते हैं, बट एग्जाम में अपीयर तभी, मेंबर तभी बनेंगे जब इनका एक्सपीरियंस 3 साल का हो जाता है। हाँ, आपको एक सीखने से सुधांशु जी कोई से नहीं हो, सीखने इससे से पहले कोई एक नहीं और हो। क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन इससे पहले कि व्हाट इज, अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया था, बट सी ये क्वेश्चन है व्हाट इज इन इट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज नॉट इंटेंडिंग फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ पे काफी सारे यंगस्टर्स भी होंगे जो अभी अपना कैरियर, जो करियर लाइन है वो थोड़ा मतलब आई एम नॉट सेइंग कंफ्यूज, बट अभी चूज करने में का सोच रहे होंगे या फिर शिफ्ट करना चाहते होंगे अगर वो अकाउंटिंग में है, and they want to practice, they want to grow in their career as an in employment only, तो वो इस लाइन को इवेल्युएट कर सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, एज अ न्यू फील्ड, कि जहाँ पे वो वैल्यूएशन सीखें और उसके बाद वैल्यूएशन के लिए बड़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के डेट में इंडिया में मैं आपको बताऊं रिसोर्सेज नहीं है जो वैल्यूएशन करने के लिए इक्विप्ड हो। मतलब राजीव सर कैन वाउच फॉर इट कि हमें अभी भी आज की डेट में टीम नहीं मिलती है जो ढंग का काम कर पाए। रिसोर्सेज आर वेरी स्केयर। मतलब मैं आपको बताऊं हर महीने मेरे पास अलग अलग कंपनी से, मैं ईवाई में था तो थोड़े कनेक्ट्स हैं हमारे पास काफी सारे कंपनी से, कि अभी भी मेरे पास आता है कि कोई अच्छा रिसोर्स है वैल्यूएशन के लिए तो दे दो। तो यंगस्टर्स कैन ऑलवेज चूज इट एज अ लाइन ऑफ देयर करियर, कि वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं सोचना कि वो वैल्यूएशन को एज अ फुल टाइम करियर बना लें इवन इफ दे आर इन एम्प्लॉयमेंट। दूसरा हमारे पास आता है, जैसे राजीव सर ने भी बोला कि दोज हु आर एट देयर वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के बाद सी मेरा मानना है सीए या जो हमारे पास फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, ये कभी रिटायर नहीं होते और लॉयर्स कभी रिटायर नहीं होते। तो जैसे जैसे ये एज होते जाते हैं वैसे वैसे इनका एक्सपीरियंस और निखरता जाता है। तो बेसिकली जो दोज हु आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, एक बार रिटायर होने के बाद दे कैन स्टार्ट अ सेकंड इनिंग एज अ वैल्यूअर, even if they are not interested in passing the exams, काम जानते हैं तो they can always work as a consultant। इसके अलावा बेसिकली हमारे पास एज अ यूजर भी इसका काफी यूज है। मतलब बेसिकली अगर मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पे और मेरे पास कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, मैं अकाउंटिंग टीम में काम कर रहा हूँ, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड विद माय अकाउंट्स गेटिंग ऑडिटेड, और वो वहाँ पे आई कम अक्रॉस विद वैल्यूएशन रिपोर्ट, मुझे नहीं आएगा समझ में वैल्यूएशन, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक ऑडिट पेपर की तरह लूंगा, अपने डॉक्यूमेंट में लगा दूंगा, मुझे उसका इम्प्लीकेशन समझ में नहीं आएगा, और एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को व्हाटएवर इन कैपेसिटी आई एम इन, मैं उसको बेसिकली ऑडिटर से ऑडिट कर देगा, मैं उसको लेके चुपचाप रख दूंगा। अगर मुझे वैल्यूएशन समझ में आता होगा तो आई कैन आस्क क्वेश्चन टू द ऑडिटर्स, आई कैन आस्क क्वेश्चन टू द वैल्यूअर, आई कैन आस्क क्वेश्चन टू एनीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या इसको हमने कैसे फैक्टर किया है। इसके अलावा जो रेगुलेटर्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका अपना अलग रोल है। तो बेसिकली वैल्यूएशन की नॉलेज होना is definitely going to boost you or help you to perform your job, if you, even if you're not working as a valuation employee or in a valuation team, फिर भी आपको ये हमेशा एड ऑन होगा। तो एम्प्लॉय मतलब बीइंग एन एम्प्लॉय, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर बेसिकली people who can do this course and who can practice as a valuer, who can basically work as a valuation expert। ये क्वेरी ले ली सुधा, आपने? हाँ हाउ एक एक्सटेंसिव? स्मॉल टाउन में राजीव सर ने बोला है कि आज की डेट में स्मॉल टाउन मतलब नथिंग इज रिमोट, आप बेसिकली कहीं से ये बैठ के आपकी कहीं के स्क्रीन लिए भी पे जो सर। क्वेरीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखिए यहाँ पे आरवी प्रोग्राम में एक सेट कोर्स सिलेबस है, वो सेट सिलेबस हम वहाँ पे करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं आता, बट ऑफ कोर्स इंडियस में कुछ एस्पेक्ट्स हमें कवर करने होते हैं, वो कवर होते हैं, बट इन दिस 50 आवर्स वी गो बाय द सिलेबस। डेट सिंडिकेशन में बिल्कुल रोल होगा वैल्यूएशन का, बिजनेस वैल्यूएशन का, क्योंकि कई बार मतलब आपको बेसिकली डेट भी मिलता है तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। दैट इज वन थिंग। और डेट देते समय आप सीएमए डेटा बना के जाते हैं, उस समय अगर आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ जाएंगे कि इसका क्या फ्यूचर है और कैसे द बिजनेस इज गोइंग टू अनफोल्ड, तो आप निगोशिएट कर सकते हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। राजीव सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, हमें डेट सिंडिकेशन के अंदर जो आपका अगर बिजनेस का वैल्यूएशन कई सेगमेंट्स में लोग कराते हैं, बट बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी और लैंड ये तो या मैंडेटरी तो है दोनों में। और हाँ, इम्पोर्टेंट हो जाता है वहां पे फॉर बिजनेस का मॉर्टगेज कई वगैरह। जगह कराते हैं, कई जगह नहीं कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हु इज द पार्टी एंड हाउ दे आर विजुअलाइजिंग। फॉर इंस्टेंस मान लो आपका होटल है या कोई इस तरह का वेंचर है तो बिजनेस का भी कराते हैं टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट विल सर्वाइव। बिकॉज पहले कई अकाउंट्स एनपीए हो गए जो खाली लैंड बिल्डिंग कराया
और बिजनेस का बिल्कुल नहीं कराया। आर यू गेटिंग पॉइंट? सो जी। वो इम्पोर्टेंट है। और ठीक आपने है। बिल्कुल ठीक कहा अमित, ये थोड़ा मजबूरी है बिकॉज 50 आवर्स के अंदर जो IBBI के सिलेबस है उसमें डिलीवर करने वाले के हाथ बंधे होते हैं, बट कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स भी पार्ट ऑफ हम्म प्रोसेस है। तो आपको उसके थ्रू, अब जैसे हमारे जैसे IBBA है, ऐसे RBOs इन सेलेक्ट टॉपिक्स को लेके आपको एक्सटेंसिव नॉलेज देते हैं। बिकॉज आप समझिए, पहला 50 आवर्स का जो प्रोग्राम और एग्जाम पास करते हैं वो आप अपने पास लाइसेंस लेने के लिए करते हैं, बट गाड़ी रोड पे बढ़िया से चलाने के लिए और एफर्ट्स करनी पड़ती है और वो कंटिन्यूअस है। तो उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और आप टॉपिक चूज कर सकते हैं, कई बार हम चूज करते हैं जो मार्केट में डायनेमिक्स है। IBBA के साथ एक मतलब जो RBO को विवेक जी अभी बता रहे थे, उसके साथ ये है कि सारे प्रोमोटर्स और जो लोग एसोसिएटेड है सब के सब प्रैक्टिशनर है, वो किसी RBO के साथ नहीं है। हम सब खुद वैल्यूएशन करते हैं, तो हमें मालूम है कौन सा डायनेमिक्स कहाँ बदल रहा है, कहाँ पे स्किल की जरूरत है। और कई लोग जो अभी फिलहाल उतना यूज नहीं कर पा रहे, और इफ दे आर नॉट सो मच इन्वॉल्व, उनको भी हम उस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं और स्किल देते हैं। बट 50 घंटे में माफी चाहूंगा, वहां तो सिलेबस एग्जाम के हिसाब से ही चलेगा। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि मुझे एग्जाम पास करना है। एक सुमित शर्मा जी क्वेश्चन है कि अगर 50 की ट्रेनिंग कर ली तो क्या 400 वाली वापस करनी है? नहीं। नहीं वो नहीं आप नहीं करनी पड़ेगी। ट्रांजिशन फेज में बच जाएंगे, इसलिए 50 वाली जल्दी कर लो। बिकॉज 400 वाले से बचना है तो 50 वाली करनी पड़ेगी। यस। ये आप एग्जाम पास कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको 3 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराने का प्लान कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल और से सिमिलर है, IP एग्जाम के लिए भी सिमिलर है। हम्म। एनी परमिशन फ्रॉम ICI? आई डोंट नो आप परमिशन किस चीज का कह रहे हैं। वैल्यूएशन का प्रैक्टिस करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप एंटिटी बनाते हैं तो वो कॉर्पोरेट फॉर्म में तब आपको जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो इथिकल इश्यूज ICI के रूटीन प्रैक्टिस में होते हैं, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी लागू रहे। जैसे कि आपके कंपनी का नाम क्या होगा, ये सब ICI उसमें अपना उसका सिक्का चलता है। अदरवाइज नॉर्मल होता, मान लो फ्री होता तो मैं अपने मर्जी नाम रखता। ICI कहता है कि नहीं, आप जैसे फर्म का नाम रखते हैं उसी तरह से कंपनी का नाम रखिए। ये सब कारण से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बट इंडिविजुअल के लिए कोई परमिशन नहीं है। Am I इवन right? इवन राजीव जी, दे हैव आल्सो अलाउड कि आप अपने CA के साथ नीचे लिख भी सकते हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, उसमें भी कोई इशू बिल्कुल नहीं है। जैसे कई बार आप रिलीज करते हैं दूसरे कोर्सेज को, तो यहाँ पे यू हाँ, कैन, वो अलाउ कर रखा है करेक्ट ICI। Yes, you करेक्ट can. करेक्ट। बट प्रैक्टिस के लिए कोई परमिशन की अलग से जरूरत नहीं है। Am I right? 50 या आवर्स के लिए IBVA सर अपनी वेबसाइट का वो दे दीजिए। वैसे और भी है, बट हमारे अभी हम करते हैं I IBVA.com है। IBVA-RBO.com. आप ठीक है, कमेंट में डाल दो ना सुधांशु जी, कमेंट में कमेंट में डालो डाल दो। सर। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। ये डेट सिंडिकेशन का तो हो ये हो गया। चुका है। अमित, इज ये वैल्यूएशन बाय क्वेश्चन का रजिस्टर्ड आंसर तुम ही वैल्यू कर फॉर्म। सकते हो। इंडेक्स के लिए पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है। हमारे हिसाब से सी पूछो तो लीगली 100% ही है, बट देन अमित बताएंगे आपको कि मार्केट अभी प्रैक्टिस यहाँ क्या पे है। बेसिकली साबू जी दो थॉट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। एक कहता है कि सिंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कम्स अंडर कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के जितने भी वैल्यूएशन होते हैं वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकते हैं। बट एक दूसरा एस्पेक्ट है यहाँ पे, एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंडियस या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वैल्यूएशन जो है वो कंपनीज एक्ट में कवर नहीं होती, तो नॉन रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में अभी दोनों रिपोर्ट्स एक्सेप्ट होती हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की भी होती है और नॉन रजिस्टर्ड वैल्यूअर की भी होती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि ऑडिटर्स जो हैं कंपनी के, वो इस चीज़ को बेसिकली प्रेफर करते हैं या इंसिस्ट करते हैं कि आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही करा के लाइए। तो ऑडिटर के साथ अगर ऑडिटर कंफर्टेबल है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नॉन रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी इंडियस की कंप्लायंस के लिए वैल्यूएशन कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट भी एक्सेप्ट हो सकती है। वो कौन हो सकता है? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर, कोई भी हो सकता है। ये शायद हमने डिस्कस कर लिया। फीस स्ट्रक्चर एंड रजिस्ट्रेशन एग्जाम एंड ट्रेनिंग एग्जाम। ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन, मेरे ख्याल से सुधांशु जी
मतलब मेरे ख्याल से फीस स्ट्रक्चर तो अलग अलग आरबीओ के अलग अलग है। 50 घंटे की ट्रेनिंग के लिए एक सर्टेन फीस है, फिर उसके बाद मेंबरशिप के लिए एक सर्टेन फीस है, एग्जाम की फीस है 1500 रुपये प्लस जीएसटी है, जो कि आपको NISM के वेबसाइट पे जाके देना पड़ेगा। कैन वी प्रैक्टिस बोथ एज ए CA एंड आरबी? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन ही है इनका। इसका कोशिश करेंगे, ड्यू टू आज टाइम कम है, बट इसका क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या ट्रेनिंग है, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड ए वीडियो, वो अपलोड कर देंगे, और थोड़ी हेल्प भी ले लेंगे हम IBVA से, तो डेफिनेटली विल डू। वैसे तो मैंने इसका कोर्स किया, तो विल डू डेफिनेटली। एक राकेश ये महाजन जी तो का ये वाला क्वेश्चन है। राकेश जी का क्वेश्चन अलग था, मैं ये वाला मनोज जी का क्वेश्चन ले हाँ, गया था। तो राकेश सी जी का अलग है, मनोज जी ने पूछा था PPT वगैरह और नॉलेज के बारे में। आई एम सॉरी फॉर दैट। राकेश जी का अलग क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन लाना सुधांशु जी जरा। हाँ हाँ, वो वाला क्वेश्चन ले लेते ये हैं बड़ा थोड़ा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस सी यस यस। देखिए राकेश जी, जनरली 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जरूरत नहीं होती है वैल्यूएशन कराने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। और पहला उसके बाद आता है तो पहला ये क्वेश्चन आंसर करना है। फिर उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है तो वी हैव टू एग्जामिन कि दोनों में डिफरेंस क्यों है और कितना है। अगर हमें कंपेयर करना है, ऐसा नहीं है, जो आपका प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जो आपका वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, जो आपका बेसिकली सब्जेक्टिविटी कम यूज कर रहा है, दैट इज मोर रिलायबल। मेरे ख्याल से उसमें आपको लोअर या हायर नहीं करना है कि लोअर यूज करना है या हायर यूज करना है। मुझे जो ज्यादा रिलायबल है, जो ज्यादा लेस सब्जेक्टिव है, वो आपका यूज होना चाहिए, जो आपका ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। या फिर इफ यू आर एबल टू रिकंसाइल बिटवीन दोज टू वैल्यूज, मतलब आप कंपेयर करके मतलब डिसीजन जो आपको लेना है लोअर हायर पे नहीं लेना है। डिसीजन आपको लेना है कि विच वन इज मोर डिफेंडेबल, विच वन इज मोर बेसिकली लॉजिकल टू यूज। अमित, जी सर, कुछ कहना चाहिए? इसका हाँ, बिकॉज इंडेक्स के लिए आपने बिल्कुल सही कहा। इंडेक्स के लिए कोई जरूरत नहीं आईबीसी है। में आईबीसी में अलग हाँ, रेगुलेशन है। IP में आईबीसी अलग में, है, IP में हाँ, अलग। यस यस। आईबीसी के अंदर आपको 2 मैंडेटरी है, आपको लेना होता है, तीसरे की भी जरूरत पड़ सकती है हाँ अगर उनमें एग्जैक्टली। लैप्स हो सकता है, बट वो यस। लॉ लॉ इन्फोर्स्ड वैल्यूएशन है। सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर्स में आपको 2 वैल्यूअर्स का जरूरत हमेशा पड़ता है, और वो उसमें से लोअर लेते हैं। आई थिंक आपका क्वेश्चन अगर वहाँ, वो अभी फिलहाल IBBI के, सॉरी, RBI के रेगुलेशन के हिसाब से है, बट जिस दिन बैंक चले जाएंगे इंडेक्स के ऊपर तो वो भी बदल जाएगा। आपको सारा वहां पे भी क्यों 2 होना चाहिए भैया, एक ही होना चाहिए। एंड उतना खर्चा भी बचेगा और रजिस्टर्ड वैल्यू का इम्प्लीकेशंस भी होगा। इनफैक्ट आप आगे आने वाले समय में जिस दिन बैंक इंडेक्स में चले जाएंगे, विवेक जी, ऑडिट भी बैंक का आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैल्यूएशन समझना जरूरी होगा एग्जैक्टली। उस स्टेज में। और काफी RBI इस बारे में चिंतित है, मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, बिकॉज आने वाले समय में अभी जो सीएज का, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट वी डू पीपल, आप वैल्यूएशन का रिपोर्ट सिर्फ देख लेते हैं कि आ गया है कि नहीं आ गया, आप उसको देखते नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा है। डॉक्यूमेंट, एक फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और एक हाँ, चेकबॉक्स टिक कर अभी लेते हैं कि हाँ अभी ये काम हो गया। हमारे पास विवेक जी एक केस आया था। मैं अब शहर का भी नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो इतना बड़ा होटल है कि आप फटाफट पहुंच पहचान जाएंगे, बट उसमें क्या हुआ था कि उस बड़े होटल का 10 साल का फ्यूचर कैश फ्लो 3 बैंकों को, मेरे ख्याल से सिंडिकेशन की क्वेश्चन आ रही थी तो मैं बता दूं, 3 बैंकों को ऑलरेडी कस्टमर ने, अमित, बेच दिया, मतलब बॉर्डर ने उनको दे दिया था कि ये आपके पास 10 साल के फ्यूचर कैश फ्लो आप ही के पास आएंगे। और उसके बाद चौथे बैंक को फिर उस प्रॉपर्टी को पूरा वैल्यूएशन करा के उसने उसको सिक्योरिटी ऑफर कर दिया। तो जब हमारे पास ये कोई रेफर लेके आया, मैंने उसको बोला कि तुमने ये देखा था लोन देते समय? कह रहे सर हमने तो देखा था कि रिपोर्ट आई थी और वो ठीक थी इतने हमारे, तो हमने उसको वैल्यू कवर कितनी कर आ रही है रिपोर्ट के हिसाब से, और उसके बाद दिया। उन्होंने बोला ठीक है, वैल्यू वैल्यू से कम लोन देना है तो ठीक है। हाँ, तो वो जब उसको पता चला था, कह रहा कि सर हमें भी सीखना चाहिए। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे को तो सीखना पड़ेगा, एज ए क्रेडिट ऑफिसर, नहीं तो यही सब होगा। तो कभी आप अनजाने में भी कर लेते हैं, बट माफ कीजिएगा विवेक जी, वो बेचारा बिना नॉलेज का ऐसा काम कर गया, लेकिन सीबीआई कल वो केस खोदेगी तब वो छोड़ेगी नहीं, बिकॉज वो तो बोलेगी भैया तुमने जानबूझ के किया, तुमने पैसे दिए।
अभी हाँ एक जी, सुमित जी का सुधांशु। क्वेश्चन है, मैं आंसर करता हूँ। अभी दिनेश जी ने भी बताया कि आईबीवीए इज नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द नॉलेज, ये आपको सिर्फ एग्जाम्स तो क्लियर करवाएंगे, इवन आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू सम सर्विसेज कि कैसे लेना है आपको प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड टू रजिस्टर वैल्यू, राइट राजीव जी? हाँ बिल्कुल। डेफिनेटली। और हम लोग हेल्प करते हैं, बिकॉज आप देख ही एग्जैक्टली। रहे हैं जिस जिस तरह के लोग जिस पोजीशन पे हैं, तो कई हम बैंकों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी पॉलिसीज बदलते हैं। वहाँ पे आईबीए के अंदर रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारा इश्यूज है। अभी जैसे सुमित जी दोबारा पूछ रहे हैं कि स्मॉल टाउन टाउन का स्मॉल टैक्स प्रोफेशनल्स क्या करें, आपके लिए तो डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा एक तो स्मॉल टाउन, दूसरा टैक्स प्रैक्टिस, ये तो फिर आपके लिए भारी रिस्की है। जहां तक रहा कि कैसे हम काम लेंगे, तो नेटवर्किंग मैंने पहले ही बोला था, आप इस प्रोग्राम के थ्रू कई लोगों को जानेंगे, कनेक्टेड होंगे, उसके साथ एसोसिएट हो जाइए। दैट इज हाउ यू गेट द वर्क, राइट। सोमित जी, मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आज की डेट में देखिए मार्केट में दोनों चीजें हैं, काम भी है और करने वाले भी हैं। अगर दोनों को मिलाने के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अगर आपको काम आता है तो देयर आर पीपल जिनके पास काम है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है करने की। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम आता है लेकिन उनके पास काम ये नहीं है, लीड्स नहीं है ये काम मैं करने के लिए। अमित अमित मैं विवेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम शुरू करें इंडिया में। ये डेफिनेटली। एक प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपका प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से निच है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि अमित ने जो बाइट बोला बहुत बढ़िया है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्क भी है और वेरी कैपेबिलिटी ट्रू, भी सही है, कह रहे हैं आप। एग्जीक्यूटर नहीं है। तो आप चूंकि एग्जैक्टली। आपके पास डेटाबेस है, तो सबको मिला सकते हैं, तो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो विल आई डेफिनेटली थिंक। डू। तो आई एम आल्सो प्लानिंग, जो राजीव जी ने बोला है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उसमें हम कुछ छोटे और छोटे टॉपिक और मेरा डिसाइड करेंगे। इंटरेस्ट विवेक जी इसमें है कि जो छोटे और स्मॉल टाउन से जो सीएज हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि उनको डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटी मिले और उनके पास टाइम होता है, उनके टाइम को हम यूज करें प्रोस्पेक्टिव वर्क में। यस यस। कनल जी, नहीं, 11 यूए में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी कंपल्सरी नहीं है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 मिलियन यूएसडी से नीचे है या ऊपर है। अगर 5 मिलियन यूएसडी या उससे नीचे है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर दोनों में से नहीं, कोई कर अमित सकता है। अमित अब ये हम्म, अमित ये टैक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप फेमा हाँ, को बता रहे मैं हैं। हाँ, अच्छा, ये ओके, टैक्स का सॉरी, है। 11 यूए में कह रहे हैं। हाँ 11 यूए हाँ, में अभी आज की डेट में ट्रांसफर के लिए तो कोई जरूरत नहीं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो आता है 11 यूए में, वैल्यूएशन का वो आता नहीं, है। ये मेरे ख्याल से इनको ऐसे समझाओ कि 11 यूए के अंदर ट्रांसफर है या इशू ऑफ शेयर्स है। हाँ अगर बिल्कुल, मैं वो वहीं पे आ रहा ट्रांसफर है हूँ। तो कोई जरूरत नहीं है। अब इशू ऑफ शेयर्स है, उसमें अगर आप डीसीएफ करते हैं तो मर्चेंट बैंकर को पकड़ना पड़ेगा। मतलब आज की डेट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट की कंपल्सन नहीं है कहीं भी हम्म, इनकम टैक्स में। बट हाँ अभी देयर आर सम एरिया जहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन करेगा। फॉर कौन। एग्जांपल जैसे राजीव सर कह रहे हैं कि ट्रांसफर के लिए वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूएशन करनी है। वहाँ पे अगर आप डीसीएफ नहीं करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, मर्चेंट बैंकर कर सकता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकता है, या फिर मैनेजमेंट खुद भी करके दे सकती है। वहाँ पे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर कोई आपका नहीं, इंस्ट्रूमेंट एक अदर और है देन। अमित, जहाँ आप जो कैपिटल गेन निकालने के लिए जो 1/4/2001 को अगर आप कैलकुलेशन हाँ, करेंगे, तो उसके लिए भी मेंशन नहीं है कि कौन करेगा, तब वो भी कौन कर करेगा, सकते तो वहाँ भी कर सकते हैं आप। एक एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ राजीव जी। आई हैं। जस्ट वांट टू शेयर ए गुड थिंग कि आप ये देखिए, वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार, और पूरी टीम, चाहे राजीव जी है, दिनेश जी हैं, इवन आई एम सीइंग हमारे एमडी साहब सुशील जी भी मैसेजेस कर रहे हैं, वो भी रिप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या इट्स ए गुड थिंग कि पूरी होल टीम आपके लिए बैठी हुई है आईबीवे की। देखिए उन्होंने बताया, आंसर किया कि 20 फेब से ये 400 जो उसके हैं आवर्स की ट्रेनिंग विल स्टार्ट। नहीं, सो 50 इयर्स, आई 50 इयर्स थिंक। का, हाँ जी, 50 50 50 आवर्स आवर्स आवर्स। की, का। अच्छा 50 50 आवर्स आवर्स। की। अच्छा 50 हाँ, आवर्स जो आपने बताया था वो, मैनी पीपल आर आस्किंग, जो 400 कोर्स आवर्स की है वो कब से स्टार्ट होगी? नहीं, 400 आवर्स का विवेक जी अभी पार्लियामेंट के अच्छा अभी। झूले में है। वो अभी वो अच्छा जब अच्छा। एमपी लोग उसको कर देंगे तब शुरू होगा, अभी नहीं। मतलब अभी वो हाँ बिल अभी होके अभी पार्लियामेंट। अभी बिल का फॉर्म माय है। सिंसियर थैंक्स टू सुशील जी आल्सो। थैंक यू सुशील जी, आप बैक एंड पे अच्छा संभाल रहे हैं। हम्म। हाँ वो
वो हाँ डायरेक्टर वही है ना पीछे से। हाँ, तो अभी इवन जो लोग रिगार्डिंग आस्किंग फॉर द कुछ वर्क या फिर शॉर्ट कोर्सेज के लिए, तो एक नंबर हमने शेयर कर दिया, आप डिटेल भेज दीजिएगा, राजीव जी को भी ऐड कर देंगे, अमित जी को, सुशील जी को भी, तो उससे आपके जो बेनिफिट हो पाएगा डेफिनेटली विल ट्राई टू डू। सो आई थिंक वी हैव कवर ऑल द कोर्सेज क्वेश्चंस। कोई और क्वेरीज है तो यू कैन आप आस्क। विवेक जी एक काम करिए, मेरा सजेशन है, आई थिंक वर्केबल है आपके लिए, एक वैल्यूएशन का एक ग्रुप बना लीजिए। यस उसमें सर, यस सर। जितने सीए और कोई प्रोफेशनल ज्वाइन करना चाहता है इंक्लूडिंग इवन लॉयर्स, तो ओके हम सर, उसका एक बहुत इफेक्टिव होगा, और हम मे भी महीने में और 2 महीने में वॉट एवर टाइम अलाउज उसको एक डेफिनेटली नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म सीए संसार के थ्रू रख सकते हैं, जहाँ एक पे हम एंड वन इंडिविजुअल क्वेश्चन, बेसिस क्वेश्चन इज पे। आल्सो फ्रॉम माय साइड। राजीव जी, कुछ सुशील जी भी हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा होता है कि इज इट अलाउड टू अस कि हम कुछ ये कह दें कि हम मेंबर्स ऑफ सीए संसार 5% 10% डिस्काउंट देंगे, कुछ ऐसा अलाउड है आईबीबीआई की तरफ से या नहीं? वो 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 मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, हाँ, वो बट आई एम सुशील जी भी हंड्रेड बैठे हैं, परसेंट मैं उनसे वही पूछ रहा हूँ, तो सुशील हाँ जी से भी 100% मिलेगा, इसमें कोई हाँ जरूरत हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं तो आपकी तो रिकमेंडेशन की बात जरूर कुछ मानेंगे। ऐसा कर देंगे हम। हाँ हाँ हाँ, एक और सीमा जो शर्मा भी जी का सीए क्वेश्चन है। संसार के लोग होंगे उनको जरूर दी जाए, कोई हाँ दिक्कत हाँ, ये सीमा शर्मा जी का कोई क्वेश्चन है। नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस परसुइंग पीएचडी इन फाइनेंस, माय टॉपिक ऑफ रिसर्च इज वैल्यूएशन अंडर आईबीसी, एम आई एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग कोर्स? आई थिंक सीमा जी आप बिल्कुल एलिजिबल है, इनफैक्ट आपका पीएचडी के लिए भी हम कोशिश करेंगे, मेरे चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको आईबीवीए इसको फंड भी कर रहा है, अगर देखते हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तो हम आपका नाम रिकमेंड करवा देंगे अपने आरबीओ से। बहुत आप बढ़िया, प्लीज बहुत कनेक्ट बढ़िया। कीजिए विवेक जी के थ्रू। सीमा जी, वो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, डेफिनेटली विल डू। हाँ हाँ। हाँ, एक और क्वेरीज आई है, नाम नहीं लिखा। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर के लिए, नॉन रजिस्टर्ड मेंबर के लिए हम लोग एक कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर के लिए कंपलसरी है। मेरे ख्याल से 20 घंटे हैं ड्यूरिंग द ईयर, और नॉन रजिस्टर्ड मेंबर के लिए फॉर नॉलेज पर्पस। इसके अलावा जहाँ भी टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो वैल्यूज हैं, दे कैन हेल्प द वन हु हैज गॉट ट्रेनिंग ईदर फ्रॉम अस और एनीवे। मतलब बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आई हैव सीन राजीव सर के पास अगर कोई वैल्यूएशन का कोई भी मुद्दा लेके आता है, तो वो उसको रिजॉल्व करने में वैसे भी हेल्प करते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ आईबीबीए भी आप आ सकते हैं हमारे पास, जब आपके पास कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज समथिंग जहाँ पे हम हेल्प करते हैं अपने मेंबर्स की। दूसरा एक है हमारा, अभी दैट दैट विल टेक सम टाइम, हम कुछ डेटाबेसेस पे भी काम कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज, ई लाइब्रेरीज पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास रीडिंग मटेरियल होगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको सर्च करनी है, तो यू कैन गो टू आवर ई लाइब्रेरी एंड रीड अबाउट द टॉपिक, और उसके बाद आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारी फैकल्टीज के साथ, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरवी एग्जाम, तो एग्जाम तो आई थिंक डेली कंडक्ट हो कभी रहे भी हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, बेसिकली आपको टाइम ऑनगोइंग स्लॉट प्रोसेस देखना है है। सर, आप कभी भी एनआईएसएम के वेबसाइट पे जाके डेट, हम्म, टाइम और प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली। बेसिकली क्या होता है इसमें, आपने एक बार एग्जाम सॉरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपको एनआईएसएम की वेबसाइट पे जाना होता है, आपका शहर सेलेक्ट करना होता है कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, वहाँ पे आपको, और फिर एक डेट रेंज पूछते हैं। उस डेट रेंज में आपको बेसिकली ऑप्शंस मिल जाते हैं कि किस किस डेट पे कितने कितने स्लॉट अवेलेबल है, कितने टाइम के बीच में, तो आप वो सेलेक्ट स्लॉट चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अभी पेंडेमिक के टाइम पे थोड़ा सा अवेलेबिलिटी कम होती थी, बट ये वापस ओपन अप हो गई हैं, तो आपके शहर में या आपके आसपास के शहर में आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं जाके। ये आपका बेसिकली डेली बेसिस पे होता है। यस, हाँ, मेरे ख्याल से 15 घंटे या 20 घंटे की रिक्वायरमेंट है सुधांशु, सीपीआर की। 16 घंटे सर। 16। 16 घंटे की रिक्वायरमेंट है 16 आवर्स ईयर, प्रो रेटा बेसिस पे। प्रोराटा बेसिस पे। उसके बाद रिन्यूअल, मेरे ख्याल से रिन्यूअल एज सच कुछ नहीं है, आपका एनुअल एक मेंबरशिप फीस जाती है सीओपी के लिए, जो आपके आरबीओ को जाती है। सो आई एक थिंक एक एस्पेक्ट और है यस। रामजी महादेवन का, वो कह रहे हैं कि इफ फेमा इनकम टैक्स जीएसटी अथॉरिटीज एक्सेप्ट आरबीज रिपोर्ट फॉर 11 यूए फेमा रूल्स। मतलब बेसिकली देखिए, अभी कंपनीज एक्ट और आईबीसी ही है जहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट मांगी जाती है। सेबी में भी कई जगह रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स की रिपोर्ट
लगती है, बट अभी चीजें ग्रेजुअली चेंज हो रही है। जैसा मैंने बताया था कि अभी फेमा में, शायद मैंने मेंशन किया नहीं किया, फेमा में अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है जहां पे अगर आप फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, एंटिटी है, इंडियन एंटिटी है, इंडिविजुअल है, तो वहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगेगी। अभी ड्राफ्ट रूल है, नोटिफाई होना बाकी है, बट वहां पे ना उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंशन किया, ना वहां पे उन्होंने मर्चेंट बैंकर मेंशन किया। तो फेमा एंड आरबीआई हैज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग आरवीज ग्रेजुअली। ये एक बार रजिस्टर जो वैल्यूएशन इंस्टीट्यूट आ जाएगा, जो बिल पार्लियामेंट के सामने अभी रखा हुआ है, वो एक बार पास हो जाएगा तो आरबीज हर जगह अलाउ हो जाएंगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बट एक चीज हमें आज की डेट में हमें ये भी देखना है कि वी हैव टू बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप वेट करेंगे कि आपको पहले हर जगह एंट्री मिल जाए फिर आप करेंगे, तो फिर वो ये भी देखना पड़ेगा कि आपको 50 की घंटे 400 घंटे, 50 की बजाय 400 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वहां पे जो क्वालिफिकेशन के लिए में भी पैरामीटर्स होंगे वो थोड़े और स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे। बट अब ये चीजें चेंज क्वेश्चन हो रही हैं, ये कई चीजें चेंज लोग हो रही क्वेश्चन हैं। पूछ लेते हैं, ये वाला सीए ड्रॉप्ड आउट वाला, वो आपको सुधांशु जी ने बताया भी था, सीए में +3 ईयर एक्सपीरियंस। बट यस, अगर आप अदर वाले उसमें एलिजिबिलिटी में फॉल करते हो, देन आल्सो यू कैन डू द नहीं, तो अगर आप सीए सीए ड्रॉप सीए आउट हैं ड्रॉप आउट और में एमबीए होना चाहिए। एमबीए। हाँ, एमबीए या पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट भी ग्रेजुएट कर 5 ईयर सकते हैं। एक्सपीरियंस, देन यू कैन डू ओनली। मतलब अगर आप एमकॉम हैं तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर आप एमबीए हैं तो कर सकते हैं, विवेक अगर जी, आप ये भी एमए एक इकोनॉमिक्स हैं सेगमेंट तो है। कर सकते हैं। जो यस बहुत यस सारे ऐसे लोग हैं जो सीए ड्रॉप आउट की बहुत संख्या है, आपको भी पता है। क्या यस यस उसमें से हम कई लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो प्रेस ग्रेजुएट या करके बैठे हैं, उनको वैल्यूएशन प्रोफेशनल बनाए तो उनकी लाइवलीहुड एग्जैक्टली। अच्छी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर मैं एक सोचता हूँ कुछ ना कुछ करते हैं उनके लिए भी ना। दे पीपल आर सर्चिंग फॉर सम गुड क्वालिफिकेशन, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर इटसेल्फ इज ए गुड क्वालिफिकेशन। तो उसमें ही कैन, दे कैन डू देयर प्रैक्टिस आल्सो। तो अच्छा काम है, तो विल डू। एक एक क्वेश्चन हो ये रहा है। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं है, आफ्टर विलेज पास कैन अ मेंबर इफ नॉट रजिस्टर्ड कैन बी ट्रीटेड एज अ मेंबर इन फ्यूचर? वो इनका देखिए, कहना है कि मेरे ख्याल से ट्रेनिंग कर जो जो ट्रेनिंग कर ली अभी है। नहीं, जो अभी है, क्या वो फ्यूचर में ट्रांजिट हो बिल्कुल। पाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, आंसर है एग्जैक्टली। यस, यस, यस यस। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच राजीव जी, दिनेश जी, अमित जी, एंड सुशील जी, सुधांशु जी, for such a wonderful presentation, and I hope we have covered all the questions, जितने भी questions थे, in a short span of time, because even today is the Sunday में लोग ज़्यादा time निकालते नहीं है, बस वो थोड़ा rest करना ही चाहते हैं। But yes, it was a good gathering was there, and I hope it's a start. So we'll ask even request to Rajiv ji, Amit ji, so we continue थोड़े थोड़े टाइम में किसी ना किसी टॉपिक पे we'll do some webinars for knowledge enhancing. So because I'm seeing अभी लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है regarding the registered valuers, करेक्ट, when they are करेक्ट। not aware, I am surprised। 4-5 साल से तो चल ही रहा है। एंड वन एक अच्छी बात है, अमित जी, राजीव जी, मैं, हम फर्स्ट बैच में ही थे रजिस्ट्रार भी हो के। एंड अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हुआ एलिजिबल, नहीं है। क्या करना क्या नहीं करना। तो डेफिनेटली इट्स आवर ड्यूटी, नॉट ओनली एज ए आरवीओ, but हम्म, even as a member of ICI, and even so we हम्म। have to spread the knowledge. तो my request to all of you, आप दोबारा से एक टाइम निकालिएगा, we'll discuss. So thank you very much, thanks a lot। Very soon we'll do, sir, one more seminar with CA Thank you, Sansaar. thank you Sudhanshu ji, thank you very much, thanks a lot। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vivek थैंक sir. यू विवेक Thank जी, you, Rajiv थैंक sir. यू, Thank you, Amit sir. थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू डॉक्टर लाल, थैंक यू सुधांशु, एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस। हम सबको, आप सबके लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। मेरे ख्याल से आधा घंटा हम एक्सीड कर गए हाँ, exactly। Yes, sir. अपॉइंटेड टाइम को। संडे को आपने दिया, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार, एंड फिर से मुलाकात होती रहेगी। और विवेक जी, आपको हम सबका टाइम देने के लिए, और इतना आपने हम सब लोगों के लिए टाइम निकाला, इतने लोगों को कनेक्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद IBBA की तरफ से। उम्मीद है कि ये एक आज जो हमने सीड डाला है, एक बहुत बड़ा ट्री निकल के आएगा, और Exactly। हम बहुत सारे प्रोफेशनल वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं वैल्यूएशन के लिए, जो इंडिया ही नहीं दुनिया को भी सर्विस दे सके। धन्यवाद, Very थैंक यू।